Okay, so we are live, guys. Hello. Hello, I guess we are audible. Is everybody audible on the other end? Desktop audio I cannot get यार, पता नहीं क्या हो रहा है desktop audio पे. Wait. Let me just get this thing. There seems to be. Okay, now I guess. हाँ, now there is desktop audio. There was some issue. खैर एक बार बोलो हाय बोल दो सब लोग अपने अपने आप को. You are audible, बाकी नहीं है अभी. हाँ आ गया बस अब आ गया. Desktop audio पे वो default था. Now it's coming. Yeah. यार ये वाली मिली मुझे red. I am unable to find, so I didn't waste time. We are live by the way, na Mitul, just letting you know. Okay. On the YouTube. Hello guys. Hello everyone. How's everyone doing? I hope you are having a great Sunday. Unfortunately, I'm not, and a lot of us are not. So दुख दर्द और पीड़ा को लेकर आपके साथ यहाँ पर आज आ गए हैं. सैटरडे की रात है. सॉरी सैटरडे क्या संडे. I'm forgetting the day as well. ये माइंडसेट है. So आज संडे की रात है. कल से आपका वही हफ्ता शुरू हो जाएगा और आपके हफ्ते को कोशिश करेंगे कि अच्छा कर दें. और उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना ऑफसाइड टेक्स का एपिसोड नंबर 3 एपिसोड गिन लो या स्ट्रीम गिन लो, ये आपका लुकआउट है. वी आर हियर विद आवर स्ट्रीम नंबर 3. I've been joined by, as always, the 4 musketeers. 3 ऐसे शूट करता है, बट चलो 4 है तो 4 रहने देते हैं. ऐसे करके ऐसे उंगली दिखा रहा था मितुल. He is in Liverpool colors. I don't know why. We are supporting the top of the league. Top of the league, yeah. It's बनता भी है ना, मतलब चलो समझते हैं. And पति पत्नी from Hyderabad, Shreya and Bishal. So they are also joining in. And then you can see Barcelona fan who's I guess happy because they won, but he's happy है, sad है, उसके face से ज़्यादा पता चलता नहीं. अभी दिख रही है उसके 2-3 दांत, तो I can say he's happy. So yeah, and this is me Shriharsh. You know, you are known to see me in Chelsea colors, but जैसा खेल रहे हैं अब ऐसा बनता नहीं है. तो I guess Mitul, I guess you need to turn your camera. There happens to be you are in that मतलब वर्टिकल आ रही है तुम्हारी वीडियो. Just a second. अच्छा, so he has something. So खैर ये है अपना आज अपना टॉपिक क्या था. तो अपना टॉपिक ऐसा था कि वी वर सपोज टू टॉक अबाउट द ट्रांसफर विंडो. ठंड की ट्रांसफर विंडो थी पर ठंडी ही रह गई क्योंकि कुछ ऐसे बड़ा कुछ मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला. देखिए आप ऐसे करके दिखाते हुए श्रेया वहाँ पर थम्स डाउन. एंड ऑब्वियसली बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी. बीइंग अ चेल्सी फैन वी आर स्पॉइल्ड कि हम लोगों को ऐसे ट्रांसफर मिलते हैं. मतलब पिछले बार हमने देखा था एंजो आए थे, सब लोग बहुत पैसा देके मुट्रिक आए थे. इस बार यहाँ पे हमारे हाथ मूवमेंट थी नहीं, सिर्फ आउट गोइंग हुआ, इनकमिंग तो कुछ भी नहीं हुआ. एंड सो वी आर जस्ट I think that's another reason. Last winter transfer was so very active. Yeah. For everybody. मतलब अचानक से winter transfer में इतना कुछ चल रहा था, Chelsea especially, कि इस बार winter transfer normally इतना ज़्यादा active रहता भी नहीं है. You have bits and pieces of transfers like Van Dijk coming to Liverpool maybe, or a Bruno coming to United, but उतना भी कुछ बड़ा रहता नहीं है. But this transfer window was silent, but it felt extra silent because of how extravagant last winter transfer was. भाई चेल्सी फैंस को 500 मिलियन स्पेंड नहीं किया तो ऐसा शांत लग रहा है. That's why I'm saying ना we are spoiled to the core. अपना ये आदत है, क्या कर सकते हैं. खैर so अपन एक काम करते हैं. बहुत सारी मतलब फिर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई है. क्या हुआ कि अगर हमारे इसमें मूवमेंट ना हो, क्या बोलते हैं, ऑन प्रीमियर लीग उतनी बड़ी मूवमेंट, बट बाकी सब लीग्स में बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है. और अपन आज यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कोई दिस इज नॉट लाइक कि मतलब ऐसा हम बोलेंगे इस नाम और ये यहाँ गया वो वहाँ गया. वी रैंडमली गोना थ्रो आउट नेम्स. So yeah, I guess let's begin talking about the big transfers. I think like at least for me the biggest transfer was Reina coming to Nottingham Forest. Because I feel like he's been such a great player for his country, and he's just one of those guys who's good for his country but not really good everywhere else. Probably at Dortmund he was. I think he like played for Klopp and stuff, right? So now coming from Dortmund all the way to Nottingham Forest, and I think he's playing the Premier League for the first time, right? So that will be काफी interesting. I feel he was like one of those potential players that who could have played. Like
I don't know what you guys think about Gio Reyna, but I am pretty excited to see him. A little surprised, I think. Like from Dortmund to being the big name that he was becoming slowly, to a club like, I mean, all due respect to Nottingham Forest, they are not exactly like a big club material, and they buy players in bulk. We have Yeah. seen how Nottingham Forest has Right. done this over the years. Nottingham Village. Yeah. हाँ, exactly, Nottingham Village. तो वहां से ये अचानक से जियो रेना to Nottingham Forest, which is weird, and like, but still maybe understandable because Nottingham Forest is known to sign surprisingly big names suddenly. They went for Foster all of a sudden. Sorry, not Foster. No. What was the goalkeeper they signed? That guy. Oh no, not that guy. Navas? Keylor Navas. Keylor Navas. Randomly, they got Keylor Navas last season. That was last winter transfer window, if I'm not wrong. Yes. Nottingham Forest was apparently trying for David De Gea also, but David De Gea was not interested. What, they got 21 transfers, dude? Nottingham Forest at that transfer window. Yeah, Summer, yeah, winter. Summer. They got like whole new squad. But wait, why Chelsea fans are surprised? Like उसका निकाले भाई आप लोग 30-40 करते हो तो say छोटे club, but now I can't say छोटे club anymore. yes, we're coming to that soon. या वो तो एक मतलब ऐसा है ना कि जब हम आगामी stay tuned to this live stream Yeah. to get to the red part. कुछ होने वाला है, कुछ होगा, है ना, आउटबर्स्ट होंगी ऑब्वियसली. क्यों मैं ये कपड़ा पहना है इसका भी आउटबर्स्ट होगा. थैंकफुल कि यूवेंटस का गेम 1:15 बजे है. कोई रेंट नहीं. और नेक्स्ट स्ट्रीम तक 7 दिन हो जाएंगे तो सब भूल भी जाएंगे. आई विल बी मूव ऑन. हाँ, ये अच्छा है मतलब यार. यू गाइस फॉरगेट इट एंड these memories remain. एकदम दुख दर्द के बाद हाँ पॉडकास्ट नमस्ते गाइस. ये बहुत टफ था आज. मतलब जैसा अभी जो भी हुआ हम और बात करते हैं उस पे आगामी. बट उसके बाद यहाँ पर उठ के आना, यू नो, इट टेक्स गट. जिगरा चाहिए, जिगरा है हम लोग के पास, इसलिए अपन यहाँ पर बैठे हैं. खैर बहुत हो गई अपनी बड़ाई. बट खैर अपन बात करते हैं इंटरेस्टिंग ट्रांसफर्स फॉर यू गाइस. या ट्रांसफर्स के बारे में. From my end, I mean, it was definitely happening, but Sancho going back to exactly Dortmund. Correct, exactly. Yeah. That was something. Probably Look at your happiness. I mean, it's mixed feelings. I really wanted this guy to succeed because every United fan was behind the owners' lives to get Sancho in. And Exactly. You waited for 2 years. Problems. But just the fact that he absolutely did not perform in the second season also, it just didn't work out. And then whatever transpired between him and the management, especially Ten Hag. This is one guy I will say I don't want at Chelsea. It's just absolutely sad. So, but yeah, I mean, fine. If it's not working for United, you are not a player who is bigger than United. So. हाँ सही बात है. सही एकदम मैं आपकी बात से पूरा. If you can do it to Ronaldo, then Jadon Sancho. Exactly. If we can, if neither Ronaldo is bigger than United, definitely not. Sancho. Ideally, no player should be bigger than the club they are serving. That should be the norm, है ना. आप जहाँ पर हो, your allegiances lies there. आपको move करना है, you have to come out officially. जो भी मतलब रहता है, follow the procedure, go out, but don't disrespect your club. That's what it. हाँ, ये अलग बात है कि आपके जो मैनेजर है उसके साथ हो सकता है और वो होता भी है लोगों का. बट क्लब को नहीं कुछ बोलने का. सीधी बात है. क्लब सैंचो का सीन ये था. It was not with the club. It was with the manager only mostly. Yeah. But the problem is you do not go publicly. No. The management backed the ETH. More importantly, you do not go public. See, Rashford has problems. We know we are going through a patch where Rashford got suspended, got fined, and all that stuff. But the entire difference is he did not go public with it. He agreed to his mistake. Whatever happened, he did it at the back end. He did not go public with it. And then that was settled because ultimately the manager is the boss. और कोई मैटर नहीं है. हाँ. You might think कि as an employee, as a corporate employee, it might come as कि हाँ ठीक है मेरा boss तो खराब बोल रहा है तो if I speak out, am I the bad guy? But
in a footballing structure, it's still that fact that boss, the manager, is the ultimate truth till the point that the manager is in the club. Yeah, true thing. I have one thing to add. Like मैं थोड़ा सा इसमें differ करता हूँ. Like I totally agree the thing, but I feel जो सैंचो का सागा था ना, मतलब the whole thing he did, the facade, it was not as big as the previous ones you have faced. तो I still feel कि इसको they could have dealt it in a better way. Like sometimes ETH हो या कोई coach हो, for some special players या थोड़ा you have to also be the someone कि यार मैं भी कुछ करूँ changes अपने में. So he also was like, he's also old school. Like, ETH is like following the footsteps of Sir Alex Ferguson या कुछ और ऐसे Mourinho type guy. Jose Mourinho. Correct. So even now Jose Mourinho ने भी कुछ अपने में changes लाए हैं. Like we have seen it recently. तो I think कि सांचो के लिए he could have taken a special case कि चलो यार क्योंकि उसको already backlash मिल रहा है आज तक till date for Ronaldo and for many other things, right? तो उसको सोचना चाहिए था कि यार मेरे पे शायद हो सकता है कि what if some things go wrong, कभी ना कभी मेरे पे बैकलैश आता रहे तो मैं इसको थोड़ा और इम्प्रूव करके सेटल कर सकता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी. सैंचो वाज अ नॉर्मल थिंग एंड ही डिड नॉट कीप ऑन सेइंग अगेन एंड अगेन इन मीडिया जैसे बाकी प्लेयर्स ने किया. वो उसके बाद कुछ नहीं आया, नथिंग केम अप. तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ही ETH भी कुछ दूध का धुला नहीं है. ही ऑल्सो डू फेवरेटिज्म फॉर मैनी प्लेयर्स. वो खराब खेलेंगे बट वो खेलते रहेंगे एवरी गेम. ही हैज नॉट द गट्स टू बेंच देम. एग्जैक्टली. तो मुझे ऐसा लगता है कि सैंचो के लिए ना क्योंकि it was not a few more chances yeah, to Sancho, exactly. अगर फिर भी नहीं सुधरा, he went the wrong way. मतलब एकदम ही strict way चला गया, extreme way, मतलब not wrong, extreme way चला गया. तो वो चीज थोड़ा शायद सैंचो को भी लगी होगी और फिर that's the thing. And now he is assisting. There's a different way to manage a player, like a big player. No, if you consider. I think the fans would have been more in support of Sancho if he was performing well. Because the performance was also not on the paper, that's why even the fans turned on him directly. Yeah. But he's doing well at Dortmund, so I mean he got injured, I think. Yeah. Oh. He did, but yeah, like first game में तो he gave an assist आते ही. हाँ, he injured. That's fine. But वही मुझे लगता है कि सर एलेक्स फर्गसन टाइप बनना चाहता है ETH. अभी थोड़ा दूर है ऐसे बहुत. थोड़ा नहीं भाई. थोड़ा इज अ वेरी अरे एराज वो हो गए एंड आपके एक एरा एंड हो ही रहा है वैसे भी है ना तुम्हारा. But as I was saying, moving on to the next transfer, another transfer is, I mean, although the deal was done in summer, but Vitor Roque to Barcelona. Osani, how happy are you with that signing? Yeah, I know it's needed. I'm still going to wait till the summer to give this like justification of Vitor. Wait, only 6 months. The Arsenal-Liverpool game because he's a Arsenal player. He has been a former Arsenal. Oh wow. Churu, nice man. Yeah, wasn't he playing yesterday? Yesterday he scored and assisted a goal, and he took a flight and came here, and now wow, yeah. Dedication. That's dedication for the game. Yeah. So I'm going to wait till the summer. ठीक है, अभी 2 गोल उसने मार दिए. I'm not going to hype him up. मेरे को कल भी मारा, right? कल 13 minutes. He came from bench. He got a red also yesterday. Yes. 13 minutes. Yeah, only 13 minutes. He came from bench, scored a goal. उसके just थोड़ी देर बाद he got a first yellow, then second yellow and sent off. 13 minutes. Second yellow was a bit controversial. It wasn't a stamp. So that is, of course, वो referees to Real Madrid. How old is Victor Roque? He is 20, I think. Yeah, he's wonder kid, still a wonder kid, particularly according to. वो तो बारसा है तो वंडर किड बोलना ही पड़ेगा. अबे वंडर किड सब है ना, मतलब बार्सिलोना वाला वो स्टैंप नहीं है उसमें. कोई भी ऐसा रैंडम नेम ले आओ, सेंटियागो मुनेज, वंडर किड. ये वंडर किड का धकोसला जो होता है मोस्टली मीडिया उड़ाती है ना. इसमें हम सबका फैंस भी नहीं है. देखो फैंस क्या है, फैंस मीडिया चालू करती है, फैंस कैरी करते हैं. हाँ तो भाई प्लेयर्स की बैंड बजती है. देखो मीडिया के लिए सोर्स क्या है, क्लब इन्फॉर्मेशन का. दैट्स फैंस के लिए दैट्स मीडिया इज द सोर्स है ना. तो ऑब्वियसली भाई जो मीडिया बोलेगी वो हाँ दिस गुड प्लेयर नाइस. और जब वो परफॉर्म नहीं करता और जब वो द सक्सेस रेशियो ऑफ द वंडर किड्स नॉट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ग्रेट प्लेयर्स, इट्स वेरी मच ऑन द हायर साइड. हमने कितने देखे, कितने वंडर किड आके निकल गए. दैट्स अनदर थिंग. जैसे पंडित्स आकर उनके ऊपर क्या है, हम कौन है, हम लोग भी नहीं छोड़ते. हम भी निचोड़ रहे हैं. विटर रोक को बोलेंगे. हाँ
But if I'm not ETH, wrong, क्लॉप ये सब बोल रहे होंगे कि हम तो तुम्हें कंटेंट दे रहे और तुम लोग हमारे मजाक बना रहे हो यार, मतलब शर्म आनी चाहिए यार. थोड़ी मर्यादा रखते ही नहीं है इन लोग आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स, आई टेल यू. हाँ खैर, सो या Siddhant. I think even João Felix and Cancelo arrived in the start of the window, if I'm not wrong. Start of the window. But even they were a part of the winter window only. हाँ. Okay. So I think उनका तो signings worked out like वो अच्छा काम कर रहे हैं दोनों. ठीक है, João Felix is injured, but ये दो signings की जरूरत थी. And both of them are like playing well as well. Indeed. And Javi still wants to retire. Okay. I mean, Yeah. खैर, हम लोग एक बात करते हैं. या. So, I was saying, moving on to the next, so Wonder Kids की बात हो रही थी और goal scorers की बात हो रही थी. So Chelsea have loaned out 2 of their strikers, and in a game, in a season where they are not exactly in a scoring form. David Fofana to Burnley, and now Armando Broja to Fulham, which leaves Chelsea with Nkunku and Jackson, and an injured Jackson. So that is interesting. Like Dato Fofana, I mean, Broja got the start. He was not scoring maybe, but you just loan him out when you don't have anybody else is an interesting move by Chelsea, I would say. Loan move. नहीं तो ठीक है ना, मतलब आपको हो सकता है यू आर नॉट यू नो यू आर अंडर इमेंस प्रेशर, बहुत ज़्यादा मीडिया क्रिटिसिज्म है ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर चेल्सी. थोड़ा जाओ फुलहम में देखो, बाजू में ही हो तुम, कोई ऐसा दूर तो हो नहीं, एक फरलांग मारोगे तो स्टैम्फर्ड ब्रिज ही आ जाओगे, तो कोई मतलब मैटर नहीं है. ठीक है, चलो जाओ, होकर आओ, खेल कर आओ, अगर अच्छा रहा तो अच्छा रहा, वरना गेट योर सेल्फ परमानेंटली ट्रांसफर. आपको लोकेलिटी भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, यू नो, मतलब इफ यू आर इन. Dato Fofana scored also, right? भाई दो अभी, और उसका गोल देखो जरा सा, मतलब भगवान की कसम वो कैसा गोल मारा है भाई, मतलब वो गोल था, वो कहाँ से गोल था, मतलब. it was a okay goal, but yes, I am happy for David Fofana at Burnley, in a failing team like Burnley and almost relegated thanks to company whatever. David Fofana has started out well, man. Good for him. I'm glad that Broja is gone. Not like he was कुछ उखाड़ रहा था चेल्सी में. तो ठीक है, अब लोन हो गया, आके फिर वापस परमानेंट बैकपैक करके निकल ही जाना लंदन से. सॉरी, अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो Broja टाइम आ गया, कहीं और go fly somewhere. खैर, There's no point at Chelsea anymore. So एक ट्रांसफर, I'm just waiting for a summer transfer window. That's it. तो क्या मिलेगा भाई, विंटर में कुछ हुआ नहीं, और कोई पैसा थोड़ी फंसाएगा यार हम लोग के में. खैर, समर में तो कुछ मूवमेंट हो गई. No, but this was interesting because I remember Poch was extremely adamant about we are discussing new players. Yeah. But around November, December, he was all about we are discussing new players. We are discussing who we can get, especially striker. Monitoring, discussing. And ultimately, nothing transpired from Chelsea. That's actually surprised that you got in nothing, only outs. No, it'll happen in the summer. And especially when they have some injuries, some long-term injuries in their squad yet. So that's a common thing. Chelsea and injury is a common, you know, they are पर्यायवाची एक दूसरे के आजकल. Now we are down to like less than 2 digits. So yeah, that's nice. That's nice. Less than how many? Sorry, I didn't hear you. We had more than 10. Now we are less than. They had 13 injuries. Now we're like 7-8. Oh wow. उसमें भी you have Robert Sanchez, Cucurella injured. कौन है भगवान जाने. जेम्स हमारा सबसे बड़ा. मैं बोलना नहीं चाहता. अभी तक तो स्टार्टिंग 11 ही बन नहीं रहा है, सीजन चला गया है ऑलमोस्ट. They are going to rebuild. You are going to rebuild your rebuild. Rebuild the rebuild. यही चल रहा है वहाँ हमारे. तो खैर, एक ट्रांसफर जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा पूरा सागा अगर देखा जाए तो दैट इज जॉर्डन हैंडरसन सागा. भाई दैट ट्रांसफर, भाई कैसे, मतलब यू नो, ऐसे पनाती नाम ले लिया श्रीकर्ष, आर्सेनल जस्ट स्कोर्ड. हैंडरसन बोला, आर्सेनल स्कोर्ड. चलो बहुत लिवरपूल प्लेयर्स. मार्टिनेली स्कोर्ड. वाओ, damn man. Martinelli is that guy. So they are leading or what? Draw हो गया कि lead है? They are losing. They're leading 2-1 right now. I wanted Liverpool to lose anyway. अच्छा, मेरे जर्सी पहनने का कुछ तो फायदा.
रात के लिए कोई इंटर की जर्सी ला सकते हैं क्या यार, कुछ काम किया? ले दिल तो दिल्ली में है, तेरे को तो आसपास पड़ेगा. ब्लिंकेट थोड़ी ना हो जाएगा. Yeah, Vishal is saying something. Vishal, yeah. No. She was saying about Henderson. Sorry. हाँ, सो मैं कह रहा था कि यार बहुत दर्दनाक सागा है वो. आप इतना सब मूव करके इतनी अच्छी खासी पेमेंट लेकर आप मूव करे हैं इंग्लैंड से सऊदी अरेबिया. ऑब्वियसली एक वो सब जो चला है ना कि पूरे यूरोपियन एक्सपोर्ट्स हुए हैं टू द मिडिल ईस्ट, ये उसी का एक पार्ट थे जॉर्डन हेंडरसन. एक्सोडस. और इसको एक और टर्म होता है, मैं भी भूल रहा हूँ, बट खैर वो भी है ये. तो मतलब कहने का एक्सकर्शन बोलते हैं, ये एक्सकर्शन ही था ये 6 महीने का. आप जाओ वहां पर देख कर आओ. जाओ. एक्सकर्शन प्रोग्राम है, एक्सचेंज प्रोग्राम. सो वो गए वहां पर. मेरे को पता नहीं कौन सी टीम में थे, मैं भूल रहा हूँ वहां पर. हेंडरसन अल इत्तिफाक, जो भी वहां पे इतने सारे अल हैं, वो समझ नहीं आता. या इत्तेफाक से चले गए थे. इत्तेफाक से इत्तेफाक हो गई वहां पर. सो खैर वो वहां पर गए और कुछ ठीक ठाक हुआ नहीं, चला नहीं, कुछ बना नहीं, कुछ बात हुई नहीं. तो उसके बाद उनका रट लगने शुरू हो गई फ्रॉम दिसंबर इटसेल्फ कि भैया मेरे को मूव होना है, मेरे को वापिस आने का है, इंग्लैंड आने का है. बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, घर जाना. एंड आई गेस ही हैज नॉट टेकन एनी मनी और समथिंग, ऐसा भी कुछ है ना. मतलब विशाल, पैसा वैसे का भी क्या है, पैसा वैसे का कुछ है मैटर. मतलब जहां तक बेसिकली अच्छा फॉर आयाक्स ना फॉर इन सऊदी पर्टिकुलरली. मैं सुना था शायद, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसका खत्म हुआ लिवरपूल में, सो ही वेंट ऑन फ्री. दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू लिवरपूल, बट उसने तो पैसे ऑफ कोर्स लिए. व्हाई वुड ही नॉट टेक मनी? हाँ, तो हो सकता है फिर मैं कुछ गलत कंटेक्स्ट में ले रहा हूँ, बट कहने का मतलब है कि वो आए. फिर उसके बाद इतना स्पेक्यूलेशंस के बाद लगा इंग्लैंड में ही लैंड करेंगे, बट नहीं, वो लैंड किए एरिडिविजी नेदरलैंड्स. वहां पर आयक्स जो कि विच इज नॉन टू प्रोड्यूस टैलेंट, उन्होंने एक बहुत ही मतलब ये देखिए, अब ऐसा है ना, उसको अगर आप करंट डे फुटबॉलिंग कंटेक्स्ट में देखें तो इट्स अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफर कंसिडरिंग जो स्टेचर जॉर्डन हेंडरसन कर रहा है, बीइंग एन इंग्लैंड नेशनल or being a Liverpool guy, regular starter mostly in Liverpool from last year. It's a good transfer, but the way that saga unfolded, I would just like to know everybody's views. भाई कैसा, मतलब इतना बड़ा फंबल. मुझे तो बहुत ही फनी लगा है. वैसे भी तो लिवरपूल में कुछ वो भी उखाड़ नहीं रहा था. गया अल इत्तेफाक just for the money, and of course like every other player, no I want to go there and like change the human rights situation. अरे क्या है का human right? उसके बोलने से तो कुछ चेंज नहीं होने वाला था. क्लियरली वेंट फॉर द मनी. अब वापस वहां पे जाके ही मस्ट हैव थॉट कि यार यहाँ पे तो फुटबॉल ही नहीं खेल रहे ढंग से, यहाँ पे तो कोई आ भी नहीं रहा है मुझे देखने के लिए. सो लाइक अभी तो यार ठीक है, पैसे तो हो गए. Wasn't it Jordan Henderson whose transfer was like had a lot of like this, like what she said, human rights का ये था उसकी wife. Basically वर्ल्ड कप के टाइम पे जॉर्डन हेंडरसन ने बहुत ये किया था, वॉइस अपना बनाया था कि कतार में वर्ल्ड कप हो रहा है, बट वी आर फेसिंग बैकलैश, देयर आर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, वहां पे फ्लैग नहीं लेने दे रहे वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना. देन ही गॉट दिस मूव टू अल इत्तेफाक एंड ही वाज लाइक कि very tune change type of thing, like much cannot be done without going there, so I want to go there and change things on the pitch and off the pitch. Right. दोनों भी नहीं किया. Which was basically bullshit. And then now I remember on the fact that Shreya said कि वहाँ पे football ठीक से नहीं हो रहा. I remember there was a match that Al Ittefaq played which had exactly 200 people in the audience. 200. Oh really? ये कोई नंबर होता है भाई? ये तो मतलब संडे फुटबॉल में इतने आ जाते हैं, वीकेंड फुटबॉल में. I'm not sure if you. This was not in the Saudi. I'm not sure about this stat. Okay. It's not Saudi, right? Exactly, because Saudi League में like you will see a good number of fans. नहीं, this was not the Saudi League. ये जो ये चैंपियनशिप चल रहा था ना, AFC चैंपियनशिप या कुछ थे, कोई ये कप चैंपियनशिप चल रहा था. Random cup, yeah. कोई कप मैच चल रहा था. But the point is, even non-league football in England, where he has grown up, even non-league football has more than 200 people watching. Even if they don't have places to sit, they'll stand and watch more than 200 people. But to go in a club with big players where Steven Gerrard is a manager, and you go to a game, there are less than 200 people, that's actually kind of sad.
and They are like, then ये कौन है? No, they'll be like कुछ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, like मैं तो practice करने आया it's हूँ, क्या चल almost रहा कि कोविड के हाँ. अंडर खेल रहे हो, it's almost that. And Yeah, बाकी what Jordan Henderson has done, भाई मोदी जी का एक कोट है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. exactly. वही है. Hypocrite man. वही. But Also, Usabi, one more thing. Yeah. Yeah, go on. उसाबी तो कुछ बोल रहा था ऐसे करके. मैं वही बोल रहा था. आई थिंक जो दोनों स्काउट्स जो थे वो आई थिंक सऊदी के इसमें मेरे को लग रहा है उनका हो गया. बोले कि एक बोला कि चलो मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया अभी. And I think secondly, I think there is evidence now that all moves to Saudi don't work. Like तुम पैसे के लिए जा रहे हो, फुटबॉल में तुमको लग रहा है कि उधर अच्छा होने वाला है, but this is proof that it doesn't work out. Yeah. खैर ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सागा थी. फनी थिंग आई जस्ट रिमेम्बर, मुझे अभी याद आई इसकी. डज एनीवन रिमेम्बर दैट लॉन्च, लाइक इसका रिवील किया था जो उन्होंने जब की ट्रांसफर साइन हो गया है अल इत्तिफाक का. सो दे मेड अ वीडियो फॉर जॉर्डन हेंडरसन इन हिज लिवरपूल किट. ठीक है, क्योंकि तब वो आ ही रहा था ऑन फ्लाइट. सो दे मेड अ, तो ही वियर्स द आर्मबैंड ऑफ कोर्स लिवरपूल का, तो दैट इज द रेनबो बैंड. तो बिकॉज LGBT थिंग एंड ऑफ कोर्स साउदीज लाइक चैड साउदी मूव, तो उन्होंने कहा कि ये तो करेंगे नहीं, तो दे मेड इट ब्लैक एंड व्हाइट. सो इट्स सो फनी कि वो पूरी, मतलब इट्स जस्ट अ 10 to 15 seconds वीडियो जिसमें ही इज जस्ट स्टैंडिंग एंड स्माइलिंग, पूरी कलरफुल है, एंड दिस पार्ट ओनली इज जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट. लाइक एट दिस पॉइंट दे आर नॉट इवन हाइडिंग इट. एंड दिस गाय, जो तुम्हारी एंट्री ऐसे हुई है एंड यू थिंक कि तुम्हारे ह्यूमन राइट्स के लिए तुम कुछ कर भी पाओगे, राइट? मतलब लाइक इट वाज सो फनी. आई सॉ इट, आई एम लाइक व्हाट, सऊदी लाइक दे आर लाइक कि वी डोंट केयर, हम लोग तो यही है. फुल चैट मूव, लाइक दैट वाज फनी. अब इसको चैट कह लो या फिर लोगों के मुंह पे मूतना कह दो, फीलिंग्स पे, ये तो उनका लुकआउट है. खैर रही बात और जो बड़े ट्रांसफर्स हुए, एरिक डायर इज नाउ इन बायर्न म्यूनिक. सो एक अच्छी मूव, वो भी सटिया गया, मैं बता रही हूँ. वो क्या कर रहा है, वो पागल हो गया. वो फॉर्मर टॉटनहैम गाइस को वहां पे रीयूनाइट कर रहा है क्या कि भाई डायर भी आ जाए. You have Kim Min-jae, you have Matthias De Ligt, you have Upamecano, and you want Eric Dyer. What the fuck? यार बट आधे तो उनमें से इंजर्ड ही रह रहे हैं सीजन, लाइक खेल ही नहीं रहे हैं. क्या बात कर रहा है एरिक डायर? वो इंजर्ड, वो बात ठीक है, माजोरो ही भी है, लाइक कितने सारे प्लेयर्स हैं. Like he's a dumb fuck dude. That guy लिखा है यहाँ पे एरिक डायर के. But you never know, man. क्या देखा उसने? Whatever. I don't give a fuck about Bayern, but like one thing about Bayern is they barely have flops. One thing about Bayern is they barely have flops in signing. हो सकता है इसको भी पता नहीं रातों रात स्टार बना दिया. So Mane was a flop or not at Bayern? यार no, he did good, but not up to the Bayern standards. मतलब उसने गोल्स मारे, ऐसा नहीं है कि. So that will be considered a flop, isn't it? नहीं तो उन लोग को होता है एवरेज या फिर गुड. They have average or good. They don't have flop. Yeah, flops. Exactly. He did average there. Flop होता है like Sancho, for example, at United. And ये होते हैं flops, right? उनको अगर आप उसके स्टैट से कंपेयर करोगे तो ये एंटनी का बेस्ट सीजन था, जो माने का वर्स्ट होगा. Just saying. तो 8-9-10 गोल तो उसने मारे ही थे. That is. Wow, क्या? Did Liverpool replace Nunes with Mane? No, that was Mane with Nunes. Firmino with Nunes. वो Sattu Supari came in na in place of Mane. Sattu Supari means that's a code word for us. For Luis Diaz we use Sattu Supari. So yeah. खैर एक और सत्तू सुपाड़ी यार, वो गोलमाल वाला यार. कम ऑन, यू आर नॉट गेटिंग इट. गोलमाल फर्स्ट वाला सत्तू, ही लुक्स एग्जैक्टली द सेम. दैट सत्तू सुपाड़ी, सिद्धार्थ गाय फ्रॉम महाराष्ट्र फिल्म इंडस्ट्री. सो खैर ये अपन ज्यादा. हाँ, एक और मूवमेंट जो हम इसके बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाहेंगे वो है कैल्विन फिलिप्स की. कैल्विन फिलिप्स जो कि वेस्ट हैम यूनाइटेड आ गए भाई साहब. टूरिस्ट बन गया अपने सिटी. यार एक बात बताओ, वो इतना अच्छा खासा खेलता हुआ खुश मिजाज करियर उसका एट लीड्स. अरे लीड्स में बाबा, लीड्स में बोल रहा. लीड्स में तो ही वाज गुड ना, दैट्स व्हाई ही वाज इन द इंग्लिश टीम यार. हाँ, सबर करो थोड़ा सा, मतलब आदमी. खैर, तो वो वहां पे मूव किया, उसको मतलब इतना हाइप करके खरीदी ना. कितने में खरीदी थी मेरे को याद नहीं आ रहा अभी. तो सिटी अच्छा महंगा में खरीदी होगी जहां तक. जब वो आके जैसे आदमी को इतना हैवी में खरीदे तो फिर कैल्विन फिलिप्स को तो अच्छे में खरीदा. खैर,
तो कैल्विन फिलिप्स जब इधर आया तो बहुत सारी थी कि यार हाँ चलो हो सकता है कैल्विन फिलिप्स विल बी अ गुड एडिशन, बट इन लास्ट ये शायद दो साल हो गए, 1-1.5 साल मेरे को पता नहीं जहाँ तक हो गए, आफ्टर वर्ल्ड कप वाला 1.5 सीजन था, 1.5 साल हो गया शायद, हाँ 1.5 साल में वो आदमी पता नहीं कितना के मैं मतलब एक अगर था कि कैल्विन फिलिप्स एक आदमी है अच्छा खेल रहा है बढ़िया खेल रहा है, मैं लिटरली आई वाज विलिंग टू सी, मैं उसको ज्यादा खेलते मैंने स्पेसिफिकली नहीं देखा है, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। he has खेला ही but नहीं I है mean तभी तो he दिक्कत he है। has Yeah. कम खेला है। हाँ बैठे Very बैठे less. अगर आप टेबल जीतते हो चलता है। एग्जैक्टली बिना खेले बेंच पे बैठे ही बैठे वुड हैव नेवर, लीड्स में उसका हाईएस्ट अचीवमेंट ये था कि वो टेक अस होम में आया है, टेक अस होम में आया है, वो जो शो आया था टेक अस होम उसमें आया है, दैट इज हिज अचीवमेंट। यहाँ पे ही इज विनिंग ट्रेबल एंड इज गेटिंग मनी, गेटिंग फ्री के फॉलोअर्स ऑफ कोर्स, सिटी के थोड़ा भी जो भी आते होंगे सोशल सब मीडिया भी से मिला आते यार। अरे सबसे भी पर मिला। अब एक फटाफट बात कर लेते हैं गाइस अबाउट वर्नर। अरे चेल्सी गाइस वर्नर कितना बड़ा ट्रांसफर पर मिस कर रहे हैं, कम ऑन यार, इतनी सब बात कर ली No, अपन। no, I thought I was going to say later on. I Yeah, am yeah. excited to see Werner and Dragusin. देखिए- मुझे Dragusin के बारे में कुछ नहीं पता, but based on his attitude, I am excited to see and Werner. probably the name, you like the name, I think. Yes, I like the name. I ड्रैगुसिन like the name. रोमानियन ब्लड, Game of Thrones vibes. ड्रैगन, Yeah. शक्ल भी उसकी ड्रैगन। वाइकिंग्स जैसी है, प्रॉपर हाँ, वाइकिंग्स yeah. लुक, वो although he is आगे Romanian. भाई। I'm surprised by the Werner move, but good for him. He got an assist. I think he got 1 or 2 अरे अच्छा assists. खेला भाई, प्री असिस्ट भी है उसके, Versus United only. कल देखो प्री असिस्ट किया दोनों गोल में उसने, प्री असिस्ट नाम की अब चीज एक बताओ। होती है तो As a to make Chelsea people fan, relevant, अब प्री असिस्ट जैसे लान लग गए, फिर प्री आ जाएगा, फिर पोस्ट असिस्ट भी होगा कि आफ्टर गोल जिसने उसके साथ सेलिब्रेट किया वो पोस्ट असिस्ट में आएगा है। देखिए कुछ भी मतलब। बात Yeah, तो ये I'm है, happy for Werner. I am happy but I'm also sad that he's doing good at Tottenham because I don't want Tottenham to do any good. That's भाई my अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए, अब तो हो Chelsea के गई सारे है। लोग भाई जिंदगी जी रहे। तुम्हारे आधे से ज्यादा प्लेयर्स पूरे लीग में भरे पड़े हैं, आदत हो Yeah. जानी चाहिए अभी। हाँ अब तो हो गई है। खैर मिलान में 3 प्लेयर कैरी जॉब कर रहे हैं, पुलिसेज, आरएलसी और जिरू। भाई फिर पीछे वो आरएलसी, अपना अबे टोमोरी, तू छोड़, टोमोरी 4 अबे प्लेयर है वहां पर। सब छोड़, तू आरएलसी भाई क्या कर रहा है वहां पे, मतलब वो क्या गोल पे गोल Yeah. मारे जा रहा है, असिस्ट दिए जा रहा है भाई, मतलब प्रेस मजे ही मजे हो गए उसके वहां पर जाकर। खैर और कुछ मतलब मितुल कोई और फ्रॉम द अदर ट्रांसफर Yes. विंडोज दैट यू थिंक? मेरे क्लब की भी, यूवेंटस की हाँ भी हाँ are हाँ 10 दो आए हैं signings, शायद yeah. या हाँ तो 2 क्लब्स, जस्ट फॉर द पीपल जो पहली बार ज्वाइन कर रहा है, आई डोंट सपोर्ट लिवरपूल एट ऑल, आई हेट देम। आज मस्ती में पहनी, ठीक है, तो इसलिए पहनी कि हार रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि आई लाइक काइंड ऑफ लाइक सिटी इन पीएल, बाकी इतने क्लब्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं, तो सिटी के लिए अच्छा रहेगा अगर आर्सेनल जीतती है ना, लिवरपूल से गैप वरना बढ़ जाएगा काफ़ी अगर लिवरपूल विंस। एनीवेज यूवेंटस इज नाउ लाइक लैक ऑफ फंड्स तो रहते ही हमारे पास, बट अब अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग सारे यंगस्टर्स पे पैसे लगा रहे हैं, थोड़े थोड़े ही लगाते हैं बट यंगस्टर्स पे लगा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जो नेपोली का स्पोर्टिंग डायरेक्टर था जो उनको सारी बड़ी साइनिंग्स लाता है, क्रिस्टियानो गिंटोली, वो ही लेफ्ट नेपोली एंड ही केम टू यूवेंटस दिस सीजन ओनली। तो दिस इज द फर्स्ट सीजन एट यूवेंटस एंड ही इज मेकिंग ऑल दीज डिसीजंस, और उसके पीछे ये सब ब्रेन है फॉर ऑल द न्यू प्लेयर्स एंड ऑल द यंगस्टर्स यू आर सीइंग प्लेइंग एंड डूइंग वेल फॉर यूवेंटस। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत खराब हो गया था, तो वी बॉट 2 players, like 1 on loan and 1 on permanent signing. Thiago Jallo, he came from Liga. He's just 22-23 and he's a center back. So another future center back. So we are already making our future set as of now. And he was very good. I have seen some stats and some videos of him. Before an injury, he has got a major injury, ligament. I'm not sure कि उसके बाद कैसा खेलेगा. He's returning well. He's I think French, if I'm not wrong. So he has this connection with Rabiot, like few people who can help him out in club, right? he's French Yes, with and the then- African ancestry something. Yeah. Yes, correct. And then we have another player that we got from Southampton, Carlos Oh. Alcaraz, who has the same Correct, name of correct. tennis player. इस पे भी मीम बना था कि Juventus posted the page की welcome Alcaraz and he commented on it कि I will try my best guys कि मैं अच्छा खेलूँ आपके सामने ऐसे. Oh wow. That is, yeah, he did. Yeah, basically few days back only he came to Italy also, और अभी वो सब कोई कप चल रहा था, तो he even went to अच्छा. Juventus stadium, तो तब से ना people were like अरे Alcaraz Juventus fan है क्या, something like that.
तो उसके बाद जैसे ही अल्करेज का आया तो ही कमेंटेड ऑल्सो कि थैंक यू गाइज फॉर हैविंग मी, आई विल ट्राई टू प्ले वेल. तो एनीवेज दिस गाय कार्लोस अल्करेज इज एन अर्जेंटाइन एंड साउथहैम्पटन का प्लेयर है, तो आई एम श्योर कि अकेडमी आई थिंक अंडर से कुछ ये से लोन निकला में है आया है. उनका. लोन में आए with an option to buy. We can buy him for around 40 million, 35 to 40 million, which we can of course negotiate at the end also अगर वो अच्छा खेले. I'm very surprised कि Southampton let him go because Southampton is actually fighting for promotion. They are in I think top They're doing 3 good. if I'm not wrong, Second. top. They're second. Second, Just correct. a point. Then third में Ipswich है शायद. Third में Yes, sir. Ipswich है and second पे 60 points के साथ Southampton है. And I have heard about him. He has played in 6 different positions for Southampton this year only. Oh. Like 3 games as a striker, 3 games as a right winger, midfielder, CDM, right arm. Like so, he's a versatile utility player. Handy player. That Handy is player, right? And I think it would be very like good for us. He's in the squad also included. He and Thiago Jallo both are squad included Oh, today. nice. Today? Yeah, Tonight. versus Inter. Of course, they might not start for No. sure, but being Oh. on the bench against a big game at San Siro, I think that would be a very good thing for them. I hope we see Carlos Alcaraz today for just 2-3 minutes. I just want to see how he plays in midfield. तो ये कुछ चीजें जो यूवेंटस अच्छी कर रही है, बट आई एम वेरी शॉक्ड कि 40 million for like a player like Alcaraz. I'm not sure how he turns out. So let's see if we buy him or not. But yeah, there is a video posted by Juventus now, like 2 days back, कि he is meeting all the team. So Danilo asked him कि how are you? He said I'm nervous. I said why? I have never played for a club like Juventus, and he's like don't worry, I am here for you. कुछ भी चाहिए from grocery to anything, I am call me. So that is a funny thing they posted. Yeah, I think because they are South American connection, right? Danilo and Argentine, Brazilian Argentine. Yeah. Let's see. That's it. I'm excited for them. New signings always bring the fresh air, happiness की. So कुल मिला के ये transfer window. Aksa, I guess Vishal has some more. Do you have anything? हाँ नहीं, actually same thing. Before we move on to the matches that we want to talk about, one thing I'll just go through the comments and one thing that Pranoy David mentioned is very interesting that if you guys remember, the same thing happened during 2015 to 2018 period, as in the Saudi thing, where there were a lot of big names leaving for China. Correct. We all remember that entire phase. And we all know where that took them and where the league is right now. So that's a direct comparison. What happens, like, because we have seen what happened in China, it didn't work out for them. But then there were a lot of other factors, like COVID happened and many other factors. So China being not a very good market for football. One more thing. Exactly. So yeah, footballing culture itna nahi hai. Let's see. I am not sure if it is the same that will happen to Saudi, but it is visible that just bringing in big names is not enough. You have to do a bit more to get into invest. That level where we are talking To about. cultivate, yeah. like the whole league. But I'm still optimistic शायद सऊदी चल जाए because कुछ ज्यादा ही आ गए. चाइना में इतने नहीं आए थे. सिर्फ रोनाल्डो आ गया भाई और उसके बाद सभी आ गए पीछे कुछ ज्यादा ही हो गया है. मतलब लाइक इतने सारे साइनिंग्स एक साथ आ रहा है जैसे इट्स लाइक कि कोई धर्मशाला खोल ली हो, जो भी आ रहा है बैठ रहा है. That's too much. Let's see. And viewing आ रही है. I would say I'm watching थोड़ा बहुत सऊदी. I watch like 10-15 games I've watched so far. थोड़े लोग भी आते हैं देखने अच्छे खासे. But हाँ, difference of is course. there because Difference China for में I sure. think PL का तो लेवल ही नहीं है. मतलब if you see Europe का उसके सामने नहीं चाइना का आई थिंक और एक डिफरेंस है कि एक या दो ही टीम थी जहाँ पे वो लोग मेजरली जा रहे थे. आई थिंक सऊदी में Guangzhou spread out हुआ है. Evergrande या 4-5 teams. 4-5 क्लब में गए हैं सब. Right. But a small plug-in in that कि China से कि Phil Ivey has retired. That's sad. See, guys, instead of laughing, we should lower our voice to a lower decibel and give 21 topo ki salami to Lord Moran Felani. Because come on, that guy has, single-handedly, पहले जब मजाक लोगों का कम उड़ा करता था ना, तब ये आदमी था जो अकेले अपना मजाक उड़वाता था, है ना? तो वर्नर तो न्यू लोग हैं. हाँ, ये सब बहुत नए बच्चे हैं सब. सबका बाप दादा है, सबका परदादा है मॉरन फेलानी जब मजाक उड़ने के समझे. बस मैटर ये है. कुल मिला के बड़ा दुख हुआ सुनकर. मेरा दिल में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया. एक्सप्रेशंस भी मस्त होते थे, फनी एक्सप्रेशंस. भाई, that you remember that photo? उसके
फेस में बॉल पड़ी थी, Face से पड़ रही है, ऐसे कुछ हाँ। टाइप का था. छी भाई, that was a very weird face that he made. But खैर, so ये रहा. Another comment from Aaron Shrihars, if you want to read that out. What? Another comment we have from Aaron. हाँ. Just okay, I'll Yeah. that. So he's saying that Oscar is the last star remaining in Chinese league. Also, this is also very interesting that Chinese football frenzy was funded by private companies, and Right. it a lot depended on the success of those private companies, whereas Saudi ka government funded hai, and they have a goal, that 2030 World Cup. Correct. So that is a big reason why they are funding also so many superstars. So this money will not go away. It's not a private company, and Saudi government money is not going away. So it will be interesting. Guys, Okay. Konate has been sent off. Konate. चलो शाबाश. भाई आर्सेनल इज बीटिंग. आर्सेनल हरा रही है भाई साहब. हम ही पागल हैं. हम पागल हैं, हमारे फैंस पागल हैं, हमारे प्लेयर्स भी पागल हैं. मैंने कुछ ना बोलना भाई, मैं बोल दूंगा अभी. मैं भी बोलता हूँ. रुको अभी. सब बोलता हूँ. Quickly shifting. So okay, what we'll do is we'll save the. Actually, let's not save the rant for the last. Let's get into it. Get it down. Let's get Just into before it. that, So, one last thing. हाँ I जी. just got a notification कि लीगा में एक मैच चल रहा है. Nice हाँ. breast का, nice versus breast का. I don't know why. It's 60 minutes 0-0. But I just saw it. I'm like कि ये क्या चल रहा है? वही मतलब. I prefer not to speak. If I speak, I'll be in big trouble. But Shrihars and Shreya, you have to speak. So, okay, Yes. quick recap. Midweek match. एक तो रात के 1:45 को वो मैच स्टार्ट होता है, and we get a very Liverpool versus Chelsea at Anfield. Jurgen Klopp first home game after he announced that he is not going to stay beyond this season. And Chelsea go to Liverpool just praying for 1 point. That results in not a point but only one goal that Chelsea scores, and Liverpool thrash them 4-1. Today, just before this stream, as Shreehas and Shreya were mentioning, they had another game at home versus Wolves, and somehow they ended up conceding 4 goals again versus Wolverhampton Wanderers, scoring 2. The scoreline ended 2-4 in favor Oh of my Wolves. God! I watched till 3-1. 4-2. 4-2. Yeah. So, Shrihars, let's start with you. No. with the change of jersey. See, the thing is, guys, मैं बोलूंगा बट पहले श्रेया को बोलने दो. श्रेया बोले लेडीज फर्स्ट. I am generous enough कि ladies first. Come on, Shreya, please do the honors. No, okay, so I don't know. I'm not really sad right now. That's why I don't have much of a reaction. Like, I'm not going nuts at this moment. I am very irritated with the fact, moreover, that I have to live with a United fan. Not that Chelsea lost also. Like, the dard is somewhere else. Like, I'm just annoyed that he won against Wolves and he won the game against West Ham today. So I'm pissed at that. So And won against Wolves. I just said that. Yeah. That So- was not the rant we were expecting. Please. Exactly. No, I don't have a rant, unfortunately. I खुल don't के have a श्रेया, rant. खुल के बोलो, खुल के. Come on, अंदर का आने दो बाहर. I am not watch out. I am not watch out. So first of all, I think Twitter is raging. I am not watch out till now. Let him have the season. I think people should like just chill, yaar. मतलब I know why you're saying that. I know why you're saying that. नहीं, ये No, इसने I don't- बताया था. The deal that you have. I should not be poach out. Ah, sorry. No. उल्टा है. She should be pouch out according to उल्टा that. है, Yeah. उल्टा है. Sorry, Yeah. my bad. So I'm not for poach out. Like I'm like generally and really saying, I am irritated with his sub management, which has happened today also. 3-1 Arsenal. 3-1 Arsenal. Why, who scored? Has lost it. Leandro Trossard. Okay, never mind. Trossard, man. Damn. So the fun fact is now I'm getting irritated because the other London team is winning against Liverpool, where we got beaten 4-1. But okay, that's fine. My rant is only about that we don't have a
starting 11, like a proper half consistent starting 11, and that has been the thing all season with all our injured players. And Pochka management, like the sub management, is completely shit, which irritates me. And the other thing, I think I've already spoken about, that Cole Palmer as a fucking number, like false 9, does not work. Like, drill it in your brain, dude. It does not work. So I'm irritated. I need 10 Cole Palmers. Someone fund me or give me 10 Cole Palmers. I will also coach them and I will make them win a game. Like, I'm done. I'm surprised you didn't rant about the referee because I don't have anything to say. मैं बताता I हूँ. don't have anything to say about. मैं बताता about हूँ. fault. यानी सब refs are fucking assholes. I cannot do anything. I am over it. I am just beyond it. I am not at that stage anymore where I should be ranting. सही बात. or whatever. I'm done. New day, new shit. New day, old shit. Yeah. Old shit, yeah. आज देखो विशाल के सारे कितना जोश है, he's saying all these things back to back. हिसाब से शिलाट ने स्टार्ट किया था पिछले हफ्ते, rant. Please. Jokes on you, bro. Jokes on you now. मेरे साइड भी वो rant ले ले. तो पिछले हफ्ते भी अपन कुछ उखाड़े नहीं थे, अपन उखड़ के ही आए थे पहले भी, है ना. ऐसा ड्रॉ खेल के आए थे. वो बोला था ना हफ्ते में 2 खुशी नहीं दे सकते. हराम खोरों ने इस हफ्ते में 1 खुशी नहीं दी. पूरा ये सिद्धांत वाला सीन हुआ है हमारे साथ. पिछले हफ्ते वो बोल रहा था कि उसको बार्सिलोना ने खुशी नहीं दी. इस हफ्ते हमको चेल्सी 1 खुशी नहीं दे सकी. साले 4-1 वहां हारते हैं एनफील्ड में, और अपने घर में कौन हारता है भाई 4-2. अबे तो शर्म तो करो. मतलब साला तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम, और 2 गोल जो शुरू के पड़े. आई एम सो फकिंग पिस्ड ऑफ भाई. तुम्हारे पैर तुम क्या, मतलब क्या खेलने आए हो भाई, भगवान की कसम यार. आई एम सी यू नो आई एम मैं चाहता हूँ कि टू गो ओवरबोर्ड, है ना. बट ये टीम ना अब वो भी डिजर्व नहीं करती मालूम. इतनी वाहियात गंदा डिफेंस, डिसासी द डिसीज पीछे में. थियागो सिल्वा, मुझे दुख है आज थोड़ा सा ओन गोल भी गया, टाइप ऑफ ओन गोल रिफ्लेक्शन में था, बट दुखद है. और अभी तो फिर उनकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने बहुत कुछ बोला है ट्विटर पर, और बहुत सारी चीजें बोली है उन्होंने ट्विटर पर. तो उस चीज को भी जरूर, अगर जो भी फैंस है प्लीज आप जाकर देखिए ट्विटर पे. बेले सिल्वा ने क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है, बेल सिल्वा. हाँ ठीक है, कम से कम नाम तो नहीं बचत कर रहा हूँ जो करता हूँ. खैर, रेफरी, इन रेफरियों को ना क्या करना चाहिए, इनको नंगा बैठाना चाहिए. और जो कोड़े होते हैं ना जिसमें ऐसे कांटे लगा हुआ, तो कोड़े मर साले को खींच के 4. अबे कैसे चूतिया रेफरी हैं इन लोगों के. इनके लिए ना एक टर्म यूज करता है मनोज बाजपेयी, गांड के अंधे. वही 6 साले ये पूरे अंधे हैं साले वहां से. इन लिवरपूल मैच भाई 50-50 डिसीजन छोड़ो, नन ऑफ द थिंग्स केम इन आवर फेवर. एक हाफ के अंदर पर्टिकुलर, सिर्फ फर्स्ट हाफ में वी वर 4 येलोज. कसीडो को 4 मिनट के अंदर येलो देता है भाई. शर्म लिहाज कुछ नहीं है इन लोगों के पास. And this guy with the audacity to say कि यार वो early मतलब few minutes में तो किसी को येलो नहीं मिलता. Osani. And all. No, that was not Osani, that was you. हेलो, मेरे को किसी में मत Osani, that was Osani. जो भी होगा वो सब ओसानी के नाम पे बिल फटेगा. Actually, that reminds me that was me. अच्छा देखो यार, देखो कितना कैजुअल लेता है, देख रहे हो साला. क्या कितना, एक तो बोलता कम है, ऊपर से कितना कैजुअली ले लिया कि हाँ दैट वाज मी. ओके, खैर, टॉकिंग अबाउट चेल्सी, सी मैं खुद आई एम आल्सो नॉट इन द फेवर की पॉच आउट. मैं नहीं चाहता, बट भाई ऐसा होगा ना, ऐसा हारेंगे घर में अगर 2-4 अगर टीम यार. बट देखो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग बहुत एकदम रीबिल्ड यू नो 3 वर्ल्ड प्रॉब्लम, रीबिल्ड पे चल रहा है अपना, है ना. कब से चल रहा है पता नहीं रीबिल्ड. वो जब से हमारे ऊपर ट्रांसफर एम्बार्गो लगा था करीबन 19-20 सीजन पे प्री कोविड, तब से हम रीबिल्ड ही कर रहे हैं ना. रीबिल्ड कर, देखो विशाल उठ के चला गया, उसको लगा कितना सुनो करके बहस कर रहा है भाई. उसके बाद तो यूसीएल जीत गए भाई, शर्म करो यार थोड़ी. देख मितुल देखो, सुनो बात को जरा सा. उसमें भी ऐसा रीबिल्ड मुझे दे दो भगवान, ऐसा रीबिल्ड चाहिए. देखो जो हम भाई इतने साइनिंग्स आ रही हैं, भर के आते हैं. रीबिल्ड का छोड़ भाई, 500 मिलियन इधर देते हम खरीद लेंगे, हमारा डेट पूरा कर देंगे. इतना तो लंदन में
देखो लंदन में इतना टूरिज्म नहीं है जितना आप ले आए यार टूरिज्म। चेल्सी लाता है तो टूरिज्म भर भर के बाहर से लोग आए जा रहे हद हो गई यार। और उसके बाद कहते हो कि रीबिल्ड चल रहा था हमारा, तो भाई एम्बार्गो के बाद नहीं, थोड़ा बाहर द बिगड़ी थिंग बात। इज उस समय भी तू देखेगा तो दैट फाइनल वाज अबाउट वन मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस. That entire final was one moment of brilliance. And whole UCL season was also अरे one भाई UCL में भी उसमें भी तू देख, अगर क्या बोलते हैं जो ये थी जो हम लोग रियल मैड्रिड को हराए थे, तो रियल मैड्रिड भी वो ट्रांजिशन के फेज में थी, है ना. उसमें भी वी डिडंट सी वो वाला जो वो जो बोलते नहीं है वो रमादान करीम बेंजीमा, वो देखने को नहीं मिला था अपने को. ठीक है हम जीते, बट द फाइनल वाज अबाउट वन मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस एंड इट लैक ऑफ वही. अगर उसी मैच में अगर हालैंड को खिला देते ना एज सिटी उस टाइम, अगर वो आ गया होता तो हमारा कोई नामो निशान नहीं था उस मैच में. सही में आज भी उस मैच की हाईलाइट जाके देखो, क्या ही था वो मैच. खैर मैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक उस बेसिस पे. मेरा ये कहने का सेंस है कि लिटरली कुछ दिनों तक मेरा ये माइंडसेट था कि यार हाँ चलो थोड़ा देखता हूँ टीम को, रीबिल्ड होगी, बनेगी, समय दो पॉच को. बट ये हाल वही हो रहा है जो पॉटर के टाइम हो रहा था, धीरे धीरे. क्योंकि क्या है ना, ऐसी लॉसेस होंगी, घर में आप हारेंगे. वुल्फ से आप फर्स्ट टाइम 1979 के बाद हार रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन योर होम. दैट्स अ बिग थिंग. 1979 आज हम they shit to make that kid from Liverpool, Bradley Cooper या whatever Cooper we made him overnight star बना दिया हमने उस व्यक्ति को. मतलब थोड़ी तो शर्म रखो यार. 10-20 मिलियन तो उसके मार्केट प्राइस उस मैच के आधी उठ गया है. उसको ही खरीद लेते हैं. अरे वो एकेडमी वाला आदमी है यार, वो कैसे खरीदेगा कोई आदमी. चेल्सी का सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, बाय इट. आउटसोर्स इट. वो घर का खाना चल गया, ऑर्डर इट. खरीद लेगा. और तुम यही देखो, रॉस बार्कले को देखो, साले ने कल ने माहौल बना दिया भाई उस व्यक्ति ने. वी विल टॉक. हाँ रेंट हो गया. कहने का मतलब यही है कि चेल्सी इज शिट, शिट डेफिनेटली. मैं बोल रहा हूँ ग्लोरी होल मैन यूनाइटेड आई एम. ग्लोरी होल. विशाल बोल रहा है ये हमारा है नहीं. ये कहीं और सा है. खैर over to you but guys. yeah, let's talk about the games that happened. Like I hope everyone freaking watched some good football yesterday in Premier League and other leagues as well, but Premier League ने तो मतलब फाड़ दिए भाई. ये हफ्ता Premier League showed what entertainment is. 37 goals in 8 games. 38 right? 3-1 हुआ उसके बाद. हाँ अभी कभी गिनो ना, अभी 4 हो गए तो 42 goals in 9 games. Damn. And still Brentford City game. हाँ वही Brentford City बचा है. मारने वाली है. वो अभी आएंगे. हालैंड, केडी भी तैयार हो रहे हैं कि चलो अब हम लेते हैं स्पॉटलाइट. हालैंड वो इज बैक. वो ट्रिवेला देगा 3-4 केडी भी और वो गोल मारेगा. But yeah, what a game yesterday. Newcastle and Luton तो was killer. Like not even I don't even want to talk about Aston Villa versus Sheffield United क्योंकि थोड़ा सा expected था कि Aston Villa would win. But in half an hour, अगर you are scoring fucking 4 goals away from your stadium, तो मतलब शेफील्ड तो क्या देखते ही रहे. उनके फैंस फर्स्ट हाफ में ही बोले कि कौन अपनी सैटरडे की लंका लगाए, चलो यहाँ से करके सीधा उठ गए उन लोग. 22 मिनट में फैंस निकल गए थे. 22 मिनट में 3-0 हो गया था. करेक्ट. तो दे लेवर लाइक कि चलो उठो. फिर कुछ लोग तब भी बैठे थे कि यार चलो रुकते कुछ तो कमबैक. फिर 30 मिनट में it reminds me of the Spurs Newcastle game where I think Newcastle scored a lot of goals and Spurs fans निकल गए थे. राइट. लंदन है यार. खैर मतलब एक काम करते हैं, सीक्वेंस से बात कर लेते हैं क्योंकि एवर्टन टॉटनहैम अपना पहला फिक्सचर था. वो भी कंसीडरिंग टॉटनहैम जैसा खेल रही है और वहां पर भी एवर्टन के घर में जाके वो वहां भी मतलब एवर्टन ड्रॉ खेली है. एवर्टन सिटिंग 18th इन द टेबल. अगर उनका 18th होंगे कि 19th है, अभी 17th हुए शायद. दे आर आउट ऑफ द ड्रॉप जोन. समथिंग हैज हैपेंड. तो कहने का ये सेंस है कि वो टीम जिसको 10 पॉइंट का डिडक्शन दिया गया है ड्यू टू देयर एंटायर ट्रांसफर फियास्को एंड एफएफपी वायलेशन, वो टीम अगर आज अपने फुल फ्लो में होती है तो दे वुड बी सिटिंग नियर टू चेल्सी के आसपास ही बैठी होती है ना. हाँ 11 और चेल्सी नहीं होती, मतलब वहां पर ऐसा कुछ होता अगर सीन.
तो वहां पर दे प्लेड अ 2-2 ड्रॉ, और उस वाले गेम में भी देखेंगे तो रिचार्लिसन भाई क्या गोल, वो गोल तो देखो, वो दोनों गोल। यार मतलब चेल्सी छोड़ के सब मतलब कबूतर यार, वो टट्टी sorry whatever I was just gonna say something which I would regret but No, no, don't yeah, regret. that See, fucking Shreya, idiot also scored. this stream is not about regretting your life decisions. We already regret our decision of supporting Chelsea, and also to some extent Barcelona वाला भी रोता है इस चीज को लेकर, ओसानी, और ये चीज को लेकर सिद्धांत भी सॉरी सिद्धांत बोलता हूँ, विशाल भी रोता है। वो आज रो नहीं रहा है क्योंकि उसने बहुत अच्छी जीत हासिल करी है, बट कैरी ऑन। Yeah. No, like decent game for Everton, yeah. Like I think you like Sean Dyche more. I love Sean Dyche. So. शॉर्ट डाइश भाई। रोबोट Nice. सो रोबोट वॉइस में ASMR सुनना पसंद है आई गेस, क्या विशाल को समथिंग रोबोट वॉइस में बोलेगा। जो प्रॉपर इंग्लिश लॉन्ग बॉल है ना, अभी भी वो एक अकेला आदमी एक ही बंदा चला रहा है सही में। He is taking on that tradition of Route 1 football. Only guy in Premier League who is taking on this tradition and proving कि वो अभी भी भी effective काम है. कर सकता है, राइट। It's still effective. If you सही have बात the है। correct और tools. बर्नली को उसने एक बहुत अच्छा टीम बनाया था करना, रॉय ऑडसन ने तक छोड़ दिया था वो करना, बट ये Roy बंदा अभी भी कर रहा है। Roy Hodgson का भी हो गया ना, he's at a phase की हाँ बच्चा लोग तुम कर लो, मैं क्या ही बताऊं तुमको, खेल लो जैसा मन कर रहा है, 12th ही आना है। क्रिस्टल पैलेस का तो वो फिक्स पोजीशन है, 12th ही आना है, कुछ भी कर लो। बट मतलब कहने का सेंस ये है कि ये मतलब इसने बर्नली के साथ भी अलग काम किया हुआ है। ये उसने एक अच्छी टीम बनाई थी जो कि समय समय पर पॉइंट निकालना जानती थी, है ना, उसको पता था। स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ द सीजन सही टाइम उसकी जो टीम्स का बोलते हैं ना, जो इंजन गर्म होता है वो सेकंड हाफ में ही होता है, सेकंड हाफ में होता है। हर टाइम का ये रहा है। लोग सारी बड़ी टीम्स को मतलब पॉइंट्स चाहिए टू फिनिश टॉप 4 या फर्स्ट पे, तब वो उनसे पॉइंट्स निकाल के देगा आपको कि लो वहां आ जाए। 3 साल पहले ही गॉट बर्नली टू 6th और 7th if I'm not या ट्रांसफर वाले मतलब सॉरी वो बिफोर अपग्रेडेड विद कंपनी बट हेल नो। खैर वो एक पूरा अलग मुद्दा है ना, वो कंपनी वाला मुद्दा पूरा एक अलग है। खैर तो ये एक मैच था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है ना। रिचार्लिसन के गोल देखकर लगा कि प्राइम रोनाल्डो नजारियो टाइप ऑफ गोल्स। या विचार हाँ नहीं, बिफोर यू मूव टू दिस गेम वीक के नेक्स्ट मैचेस, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट लूटन मैच। डैम 4-0 4-1 against Brighton. अच्छा दैट गेम 4-0 against Brighton. 4-0 against Brighton. I mean, right off and right off. I swear, how? I mean, I cannot comprehend how that happens. I mean, I get it. Brighton is a team. कभी-कभी switch off हो जाती है, but Luton 4 गोल और next game में भी 4 गोल. Next game में भी 4 गोल. And this is a team which is specifically always fighting for 1-0s. Because they make it a point that against big teams or almost all the teams who are above them in the Premier League, they make it a point that we'll just try to defend, we'll try on counters, or we'll play the game, but we'll not let goals go in. We might not score much, but we'll not let goals go in. And वो team 4 goals back-to-back matches में Brighton के against they didn't concede even. Brighton is not a team which is like बहुत हल्के में ले सकते हैं. Because Brighton did win this game week. They came back. 4-1 against Crystal Palace. Yeah. 4-1 against Crystal Palace. But to concede 4-0 against Luton is absolutely mad, which I cannot comprehend how that happened, but it's brilliant. The coach Rob Edwards, I think he is just that was the thing that we were discussing, right? Rob Edwards is what we thought company was. Exactly. And he's pulling off a miracle at Luton right now. Yeah, so that was indeed what he talked about. हम वो 4-4 के बारे में बात करते हैं, न्यूकासल वर्सेस जो गेम हुआ लूटन का, हम कर रहे हैं बात, आ रहे हैं उस पर। उसके बाद जो एक मैच हुआ बर्नली वर्सेस फुलहम, इट वाज प्लेड एट बर्नलीज होम,
और उस गेम में 70 मतलब नहीं 70 तो नहीं बट हाँ 71 मिनट तक एवरी तक का हाँ ठीक है 2-0 अच्छी विन आ रही है, फुलहम जाएगा 3 पॉइंट लेके घर। बट दत्रो फफाना बोला अपना चेल्सी का जो नया वहां पर गया है, दत्रो फफाना ऐसे कैसे के चक्कर में इस सब के कारण उस व्यक्ति ने एक तो 63rd मिनट में उनका इंट्रोडक्शन हुआ गेम में, एंड उसके बाद उन्होंने 71st मिनट में गोल मारा, और उसके बाद फर्गी टाइम 90+1 में ही स्कोर्ड अ गोल। सो just amazing. We just talked about that is like the best opening to the transfer window for Burnley, and they got a player that could score for them. तो बहुत ही बढ़िया था। और अब देखिए ऐसा है ना कि चांसेस थोड़े इनके बहुत कम हैं, जो नीचे की दो टीम है शेफील्ड और बर्नली, इनके तो बहुत ही कम है टू सर्वाइव एनी हाउ, बट यू नेवर नो, स्टिल हाफ ऑफ द सीजन इज येट टू बी प्लेड। तो खैर ये एक रहा। हम लोग फट से बात करते हैं अबाउट दैट गेम विद व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, न्यूकासल वर्सेस लुटन। By what an incredible game that was. 4-4, 8 goal thriller, incredible. Seriously. 8 goal thriller, वो भी draw. So funny. मतलब like you say कि 8 goal thriller, बारसा भी like कि आम बात है रे, खाते हैं इतने गोल तो हम, होता है। 8-2 हुआ है तो 8 goal thriller नहीं है। In the end of the game, Newcastle kept trying. Newcastle had like a solid 20 minutes of like maximum XG, और वो लोग 5 कर सकते थे, but Luton, man, they kept trying, and somehow evaded from a loss, and that too at Newcastle. At Newcastle, so Luton has the balls, dude. Like, what a team. I think this is that team which, like, you guys are talking about when Sean Dyche would make Burnley to, like, play well in the second half of the season. This guy has been cooking in the second half of the season. Seriously. For Luton now. And they just came to Premier League. So what if agle saal se we keep seeing Luton cook only in the second half of the season? First half to theek hai, goals kha lenge, but they'll come strong, and if they make some few good signings, but even if not even if they have all the great signings or not, but whatever they have, they're doing so well. That Morris guy, Adebayo, Ross Barkley, dude, what a boss. Like, boss game yesterday, like, seriously. Boss Barkley. And yeah. They have taken like rejects from all these clubs, right? They have taken Ross Barkley. They have taken United के जैसे Tahith Chong गया है, and correct. Mingy, yeah. There's one more player, but Luton is actually, it's unbelievable what they're pulling off, because everybody had written them down. A team of this small stature with no signings, almost virtually no signings, are absolutely killing it. Correct. They're doing, like Shreya said the right thing, कि they can become something good in next season. So they're basically doing what Brentford did a few years back. Exactly. वो लोग आए और एकदम से आए, and now they have become a household name, मतलब not Correct. household, but हाँ, पर कि they will stay, at least they will stay वाला season तो है कि they will not get relegated. जैसे वो आर्सेनल के अगेंस्ट भी फर्स्ट गेम ब्रेंटफोर्ड showed their character, I remember. Yeah, man, that opening game of the season. They defeated, and since then it's been good for them. So the thing is, एक जो बहुत बड़ा एक गेम मतलब जो हुआ, और उसके बारे में बेहतर होगा कि विशाल बात करें। My team. बहुत बड़ा गेम नहीं था, just हाँ ठीक है, बहुत बड़ा। See, I Chelsea Wolves भी नहीं होना था बहुत बड़ा गेम वैसे, but okay. It's actually not a big game. Like for them maybe, but no. Glory for Man United. West Ham is like top 8 team, like बन सकती हो। Yeah. They were in top. They were in 6, isn't it? Before the start of the match. Yeah. They were 6, now they are 7. Conference League winners also, right? If I'm not wrong. Yes. Conference League winner. No, but the funny thing at that, just to give context to what Shay is also saying, West Ham is 6th, correct? But if you see their XG, if you see how they're extremely overperforming their XG. Yeah. They are, I think, 15th or 16th in terms of XG. In terms of chances created, they are very low. They are just nicking away wins somehow, and that is working great for them. So they were nicking away chances, and that was working great. Okay, so I was talking about Wolves. Acha. You were talking about Wolves was not a big game at all. Yeah, I was talking about Wolves.
अच्छा, not West West Ham Ham. was okay. हाँ, तो Wolves वाला game, it's like the first half versus Wolves. Best football, best half I have seen United play this season, hands down. Agreed. We controlled everything. We did not give Wolves a whiff of chance. 2 goals, 2 beautiful goals in that first half. The best football I've seen this season. But the same problem that this United team has, the moment they panic a lot. The moment they concede, the moment they face some kind of uncertainty ki shayad win nahi aaye, they panic a lot and then they concede and they make a mess out of it. And that's what exactly happened with the Wolves game. Going 2-0 up, then conceding one, scoring again, then conceding two more, one more, and then like just Kobe Mainu, what a beautiful find we have. Again, I don't want to overhype him because it's still very new. But what he has shown in preseason, and I'm not talking about the goals. The goals are not important for a defense deep lying midfielder. But the composure that he shows as a CDM, he will be very, very important for Manchester United going forward if he keeps that composure. Because Casemiro can only give us 2 more years at max. Uske baad, the next thing to hold down that position is Kobe Mainu, has to be Kobe Mainu. We have to develop him properly. And that got showed today also. That Casemiro, Kobe Mainu pairing in the middle lets Bruno go ahead. And that is why we have been scoring 4 goals. That is a big reason why we have been scoring 4 goals, because that Bruno doesn't need to come back. He can orchestrate the front because he knows that Casemiro and Kobe Mainu are there to handle the back line. And Correct. one interesting thing that I've been watching in the past 2 games is also, I don't know if it's just because it's West Ham and Wolves kind of teams, that's why or not. But Dallo going to attack, Dallo is coming a lot into midfield. So which gives us a 3-man midfield even before Bruno comes. It's a 3-man midfield, then Bruno, and then our 3 attackers, which is giving us a lot of extra manpower in the midfield, which is needed because United were horrible at controlling the midfield. They are doing great. As far as today's game goes, extremely happy that we kept a clean sheet. Very much needed. Harry Maguire, what a great game he had. एक वो गलत पास खेला हुआ एक गलत that पास almost बस वो cost हैरी them the मैग्वायर goal. का मतलब खाते में I मैं was रख I लेता was हूँ. just वो going तो to say patented है. गाली तो दे ही रहा था मैच के बीच. एक बार फर्स्ट ही मेड ओनली वन मिस्टेक, वो उसके खाते में एक मिस्टेक लिखा रहता है, वो चलो गिना हुआ. Thankfully that didn't end up in a goal, but other than that, amazing game he had. Surprisingly enough, one player that I'm not a big fan of, Diego Dallo, had a very good game today, made some very important clearances, was very instrumental going forward. Baki, Garnacho, amazing. Hoyland, Birthday boy. cannot tell how much I love this guy. Like, he's Yes. just my favorite in the team. Made in Syria. What a beautiful lad. Scoring that goal with his left foot with that much power. With his weaker foot, right foot with that much power. Beautiful. I think Mitul atak gaya. Yeah. But yeah, I mean, absolutely nothing to complain. I mean, I definitely have things to complain A about, lot but of not today. अभी नहीं, Today is not आज the day आज to जाने complain. देता हूँ, something like that. आज जाने देता हूँ, ठीक है. आज Today आज is not the day to complain. But अगर मितुल अटक गया है तो But I still have problems with Eddie Ten Hag's game management, which was always be there. His substitution, it's the way his team approaches the game when they are leading. There is still too much to be desired. But ठीक है. I'm very happy with the 3-0 win versus West Ham. So that's about it. I Yeah. think given that Mitul has left, we can move on to Barca's game. Yeah, Barcelona, man. Some Deportivo happiness. Alaves. Okay, so yeah, it was a good game, away game. I don't know why we are still wearing that bloody yellow jersey. I don't know for what great joy we are wearing that. But I think yeah, good match overall. Gundogan Lewandowski connection, Pedri Gundogan connection.
and Christensen playing as a pivot. So I think him playing in midfield actually helped Pedri and Gundogan to like move freely because he was playing him and De Jong were like controlling the midfield. So I think Lewandowski and More in the Gavi role, is it? sorry. More of the Gavi role, because नहीं तो वो पिवट में ही था पेड्री को विंग पे ये कर दिया तो उसको फ्रीडम मिल गया वो खेल रहा था उसका तो ओवरऑल तो अच्छा गेम था विटोर रोके आल्सो स्कोर्ड विटोर रोके लेवेंडोस्की तो अच्छा टाइम है एक खुशी तो है I mean, how instrumental will Gundogan be for the rest of the season? I think he has been someone who has like baki और काम करे ना करे, he has been somewhat controlling the tempo for Barcelona whenever they are playing well, right? So I think he is one of those signings की ठीक है सिटी से आया था एक वो साइनिंग था जो मैं खुश था क्योंकि मिडफील्ड कंट्रोल करने के लिए कोई एक प्लेयर चाहिए था लाइक यू हैव अ यंग मिडफील्ड यू नीड अ लाइक एक्सपीरियंस्ड मिडफील्डर टू गाइड देम और पेड्री के आगे के लिए गुंडोगन इज लाइक बेस्ट बिकॉज सिटी से आया है ही नोज मतलब ट्रॉफीज जीतना है Treble winning captain. मोमेंट्स Treble winning captain, yeah. So then definitely having Gundogan is like a blessing in disguise. Yeah, that's the right thing. Also, Aaron is saying that Lamela Yamal, he's also playing good, by the way. So Dude, a 16-year-old starting 4 consecutive games is amazing. So did he even have a chance that, I mean, I meant to say like there was no other player in his position, or he has that. We have Rafinha, but he's injured, so he's going to the. That's why he has to start then. And La Masia, even last game, Kubrasi, he's a La Masia product. He started as centre back. They didn't play Christensen as centre back, and he played Kubrasi as a centre back. So even that worked out well. true thing. Yeah. Good. But Barca had only that one signing, right, in the winter. I mean, only one player. Even that helped. मतलब गावी का इंजरी वो ACL का हो गया उसके वजह से विटोर रोके का रजिस्ट्रेशन हुआ. Yes. Oh, right. नहीं तो हमारा तो भाई पैसे का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है. इस बार पैसे का प्रॉब्लम है. एक प्लेयर से Juventus so sad and so funny, but क्या बोले Juventus और बार्सिलोना का सेम ही हाल है. Still getting the results. It's like साइनिंग कर लिया लेकिन खिला नहीं पाएंगे क्योंकि रजिस्टर नहीं कर पा रहे. दिस इज अनहर्ड ऑफ. और फट से वहां पे इंजरी हो जाता है. फट से वहां पे इंजरी हो जाता है. इसको सपोर्ट करने का दुख अभी आ गया है तो अभी क्या कर सकते हैं. It's like कि you go to a college, random college, prospectus देते हैं, lush green campus, high tech labs, सर प्लेसमेंट कहाँ है? ऐसे यहाँ पर भी कि प्लेसमेंट का नहीं पता, you won't play or not, but बाकी सब मिलेगा आपको, फैन फॉलोइंग मिलेगी, जर्सी मिलेगी, Spotify सब्सक्रिप्शन ले लो आप, सब कुछ दे देंगे आपको. Spotify सब्सक्रिप्शन, घास के टुकड़े दे देंगे, घास के टुकड़े आपका घर का एक शादी करा दो फैमिली की. Spotify सब्सक्रिप्शन फॉर यू, योर चाइल्ड, उसका बच्चा, बच्चे का बच्चा, वो पूरा मतलब पीढ़ियों के लिए, आगामी सबके लिए Spotify सब्सक्रिप्शन अगर आपने खेला है इन बार्सिलोना. खैर मैं तो लेट्स टॉक अबाउट यूवेंटस गेम इस वीक. अभी बचा हुआ है गेम, बस जा रहा है हाथ. आज रात को ही है. I think lineups आ गए हैं, मैंने देखे नहीं अभी तक. Yeah, because I was here. 1:15 से है तो आ ही गए होंगे, I'm sure. Okay, let's read that out quickly. Yeah, can anyone tell if? Yeah. Yes, of course. So just tell me, this is Juventus ka home or It's San Siro. It's at San Siro. Ooh. At our home, it ended 1-1. Vlahovic and Lautaro Martinez. So let's start with the Juventus lineup. Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Perfect. McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Yildiz. Nice. Kostic का थोड़ा सा डाइसी है. बेंच पे I think Chiesa will be there for sure. Alcaraz है बेंच पे आज. Alcaraz, Jallo सब है. दोनों है. I don't see. That's weird. Jallo. हाँ, बेंच पे Jallo, Miretti, Via, Alcaraz है, Nonge, Chiesa, Iling Junior, Perin, Alexandro, Rugani. ठीक, perfect. And Jallo, Alcaraz दोनों हैं. Nice. Going on to Inter quickly.
इंटर का तो स्टैटिक ही रहता है। हाँ, सोमर, पवार्ड, असरबी, बस्तोनी, दरमियान, बरेला, चालानोग्लू, मिकितारियन, डिमार्को, थुरम एंड लॉटारो मार्टिनेज। लॉटारो परफेक्ट मार्टिनेज परफेक्ट। हाँ वो यही खिलाते हैं, दैट्स फाइन, बट हाँ इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स इन इटली, डर्बीज ऑफ ऑल डर्बीज, राइट? क्या डेला डर्बी इटालिया क्या d'Italia, बोलते हैं? डर्बी डर्बी d'Italia, डर्बी हाँ d'Italia, द या इटालियन डर्बी, और इट्स ऑलवेज द मोस्ट हीटेड गेम। देखते हैं गाइस, जो भी देख रहा है इस स्ट्रीम को, आ जाओ जाओ मत देखो प्लीज। यार, जियो सिनेमा आज में मत चल देखो, रहा है। नहीं चलो भाई, आज मत अपन देखो अपन यार। तो देख रहे हैं आज। इट्स अ नाइस गेम। भाई आई तेरा लिवरपूल जर्सी पहनना हेल्प्ड लिवरपूल टू लूज, इंटर जर्सी ढूंढ ले जल्दी अभी। नहीं वो नहीं पहन पाऊंगा कभी लाइफ में, बट हाँ सो एनीवेज आई वाज सेइंग कि हाँ, yeah, it's a big game because now potentially we are the only two who are fighting for the titles. Let's be honest, no one is close. Even Milan is trying, but नहीं होगा। And अगर आज हम जीतते हैं तो we'll be 1 point above them temporarily, क्योंकि उनके पास एक 1 game in hand है, तो कभी ना कभी तो वो लोग of course जीत सकते हैं। But हाँ, we have to keep the pressure on them क्योंकि they have one more extra competition to play which is UCL। हम लोग नहीं खेल रहे हैं, so we have all the advantage कि for whole 1 week we have the liability to rest and एक ही game खेलने, one game at a time, and I am very excited and nervous for the game because Inter is damn good, like they are killing it, they are not letting any chance to like कि कोई और कुछ close भी आए उनके, they are just killing big But teams Juventus has 4-0 come up 3-0। this far, so Yes, Juventus का is a different approach. We are like giving everything yeah. in every game. We are not winning big margin से ज़्यादा। Recently जीतने लगे हैं, but वैसे we are just winning 1-0 2-0। Allegri है of course, तो क्या expect करते हैं? तो Allegri को अब तो बहुत सारे नेम मिलते रहते हैं, Allegri का और हिटलर का मिक्स करके Allegri Hitler, then now Allegri Heimer आ गया ओपनहाइमर की वजह से for some reason। तो हराम बॉल, we say it हराम बॉल। Yeah. that's a nice name, I must say. कम से हारे, आई होप दैट इज फाइन फॉर अस। यस, एंड होप टू सी व्लाहोविच स्कोर टुडे, अदरवाइज का नाम चेंज कर देंगे, दैट इज फॉर यस। I guess there was Right. some So, momentarily connection issue थोड़ा सा हुआ बीच में, तो लैग हुआ। कुछ बोल रहा था तो एक बार लाइव पेज से लाइन को रिपीट कर दे जो बोला तूने। नहीं व्लाहोविच वाला। ठीक है यार, कोई बात नहीं, जिंक्स ठीक हो है। जाएगा। चलो ठीक है फिर। तो इसी के साथ Right. ये हमारी रही पूरी कन्वर्सेशन। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। इट्स ग्रेट हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ यू। आज थोड़ा सा हम लोग जरूर अपना जो चैट्स वाला पार्ट है वो कम पढ़े हैं, बट डोंट वरी, वी आर हैविंग some really good ideas in our mind. We'll definitely be testing out next time around. Thank you very much each and everyone for joining this live stream, third stream. I hope आप subscribe, लाइव शेयर सब्सक्राइब सब करिए। every time we miss it। So शुरू guys, में this शुरू shows में ही the बोलना मैं modesty, हमारे humbleness आपको दिख गई होगी हाँ कितनी कि ज्यादा हम लोग important है। लाइक्स, हम लोग शेयर्स और हम लोग सब्सक्राइब करने के भूखे नहीं है। अपन बस बात हम करना चाहते कंटेंट हैं, बनाते रह जाते हैं, यही कंटेंट। हाँ, बस हम लोग इतना लीन है इसमें। तो खैर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, एंड आई गेस श्रेया वांट्स टू से समथिंग। No. ओके, नो इश्यूज देन। बोला हंसना भी गुनाह है, कोई हंस रहा है तो नहीं, तुम बोलो क्या हुआ। नहीं शी वो ऐसे होता है ना, वो ऐसे कुछ ऐसे। नहीं। खैर ठीक है, चलिए फिर ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, शुभ रात्रि, Thank you. Bye guys. बाय गाइस। जय हिंद दोस्तों।